Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to talk about the Russia-Ukraine conflict. So let's first understand the basic background of this conflict. Okay. After the collapse of the Soviet Union in 1991, Ukraine became an independent country. Over time, Ukraine moved closer to Western countries. कुछ समय के बाद यूक्रेन का जो था झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ने लगा फॉर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. However, Russia considered Ukraine as part of its sphere of influence, and this difference of interests became the main reason behind the conflict. Okay, so this slide explains the background and root cause of the Russia-Ukraine conflict. Let's move ahead and understand it step by step. Now let's talk about the NATO question, which played a very important role in the Russia-Ukraine conflict. Okay, Ukraine wanted to join NATO because it was looking for security and protection from external threats. But Russia strongly opposed this idea because NATO's expansion near its borders was seen as a serious security threat. रसिया के लिए नाटो का बॉर्डर्स के पास आना खतरे की बात थी, इसलिए रसिया इसे अपोज कर रहा था. This disagreement between Ukraine's interest and Russia's opposition became a central trigger for rising tensions. यही disagreement tension का main trigger बन गया. So the NATO issue was not just political but a major strategic and security concern for both sides. इसलिए NATO question इस conflict का एक की फैक्टर माना जाता है. Okay. अब हम बात करते हैं 2022 के वार आउटब्रेक की, जो इस कन्फ्लिक्ट का सबसे क्रिटिकल फेज था. इन फरवरी 2022 रसिया लॉन्च्ड अ फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, शॉकिंग द एंटायर वर्ल्ड. फरवरी 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक किया, ओके, जिससे पूरी दुनिया अलर्ट हो गई. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स वाज टू स्टॉप यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग नाटो and to maintain Russia's strategic control in the region. रसिया का मेन गोल क्या था? नाटो एक्सपेंशन को रोकना और ईस्टर्न यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना. ओके, दिस वॉर डिड नॉट रिमेन लिमिटेड टू बॉर्डर्स. इट रिजल्टेड इन अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस विद मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड. Along with this, the conflict also created global economic impacts affecting energy supply, food prices and international relations. इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी दिखा. एनर्जी और फूड प्राइसेस काफी इम्पैक्ट हुई. ये वार सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया. Now let's look at the current positions of the major players involved in the Russia-Ukraine conflict. First, Ukraine's President Zelensky has shown openness towards neutrality, but only if Ukraine receives strong and reliable security guarantees. जेलेंस्की न्यूट्रल रहने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब यूक्रेन की सिक्योरिटी फुल्ली गारंटेड हो. ऑन द अदर हैंड, रसिया अंडर प्रेसिडेंट पुतिन क्लियरली इंसिस्ट्स दैट यूक्रेन शुड नेवर ज्वाइन नाटो. पुतिन जो है वो अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है कि यूक्रेन कभी भी नाटो ज्वाइन नहीं करेगा एंड मस्ट रिमेन अ न्यूट्रल कंट्री. ओके, द यूरोपियन यूनियन स्ट्रांगली सपोर्ट्स यूक्रेन बाय imposing economic sanctions on Russia and providing military and humanitarian assistance. EU रसिया पर सैंक्शंस लगाकर और एड देकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है. Meanwhile, the US continues to back Ukraine through financial help, military support and diplomatic efforts. So it shows how the conflict has become international in nature with multiple global powers involved. इसलिए ये conflict सिर्फ दो countries तक limited नहीं रहा. Now let's understand the international stand on the Russia-Ukraine conflict. The European Union and the US continue to remain united in support of Ukraine through financial help, military aid, and strong diplomatic backing. NATO, on the other hand, has strengthened its eastern defenses, but it is carefully avoiding direct military involvement in the war. NATO अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट वॉर से दूर रह रहा है वो, ठीक है. At the same time, the global community is divided. Some countries support Russia, while many others prefer to stay neutral. So the conflict has clearly become a global issue, not just a regional one. अब आगे क्या होता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा. फ्यूचर डेवलपमेंट्स पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता है. That's all for today's video. Thank you so much for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. See you in the next video.